हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू Adda247। सो आप लोगों को बताइए कि भाई देखो भाई मौसम जो है बहुत गड़बड़ चल रहा है। मान लीजिए अगर आप एसी में बैठे हुए हैं या कूलर में बैठे हुए हैं, यानी कि ठंडे जगह में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर जैसे ही आप गलती से बाहर निकल गए तो जो सनलाइट है वो ऐसी गोलाबारी आप पे करेगी कि आप अपने आप बीमार हो जाओगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स नो मैटर इन विच कॉर्नर ऑफ द नेशन यू आर। ओके वेल, यू आर वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम लोग आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को घुस के एनालाइज करेंगे और साथ ही में उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आंसर भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड विल आल्सो डिस्कस लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, व्हाट इज विल आल्सो डिस्कस अ पैराजंबल एंड विल आल्सो डिस्कस अ न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वो भी देखेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ सरप्राइज पैकेज टुडे। क्या आप गेस कर सकते हो कि क्या सरप्राइज है आज? कैन यू गेस माय डियर फ्रेंड्स? एंड वेल, okay, somebody is saying you will be giving chocolates. No my dear friends, chocolates are harmful for health. Okay, तो अगर देखा जाए तो okay, तो I can see a lot of guesses. Well my dear friends, अब देखो क्या चीज़ है। You remember I always ask you to write summary, right? आप लोगों को याद होगा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ आर्टिकल समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको समरी लिखिए और अच्छे से समरी लिखिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स? वेल माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टुडे I am going to give you the name, in fact the name and the face of a person, by the way, who gives me the best summary of the previous day's article. Okay my dear friends, देखो क्या होगा आज से जो है मैं आपको उस बंदे या बंदी का चेहरा और नाम यहां पर दिखाने वाला हूं अपने शो में, जिसका समरी सबसे बेस्ट होगा पिछले वाले आर्टिकल के लिए। तो यानी कि आज जो हम आर्टिकल यहां डिस्कस करेंगे, आप लोगों को आप सबको कोशिश करनी है कि उस आर्टिकल का सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया आप समरी लिख के दिखाओ, ताकि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपका चेहरा और आपका नाम इस पर्टिकुलर शो में दिखे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चोजन अ नेम एंड फेस फॉर टुडेज शो हु गेव मी द बेस्ट समरी ऑफ द प्रीवियस डेज आर्टिकल, एंड द गाय इज, well, he is Satyanarayan Vishwakarma. So Satyanarayan Vishwakarma, congrats to you by the way, buddy. Your summary was really amazing. It was very beautifully arranged. ठीक है my dear friends, मैं आप सबको ये advice दूंगा, try to arrange your summary in 250 to 300 words like this guy always does, and try to arrange them in 5 to 6 paragraphs attractively. Okay भाई, तो चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। Let's take a look at the first article for today, and it is well, लोकपाल and the law. तो लोकपाल को लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता आया है हमारे देश में। There have been lots of protests, there have been lots of strikes and blah 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 regarding Lokpal and the law. But have we yet got the Lokpal, you know, that we require? Let's take a look at the article, and the article is, first slide. Well, the centre's obvious reluctance to set up a statutory anti-corruption institution stands completely exposed after the Supreme Court made it clear that the existing Lokpal and Lokayukt Act of 2013 is workable on its own without having to be amended as proposed by the government. अब देखा जाए भाई तो हमारी जो सरकार है, मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, वो बड़ी हिचकिचा रही है एंटी करप्शन का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। और ये जो हिचकिचाहट है ये तब सामने आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, भाई देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके पास जो लोकपाल वाला एक्ट है ना, लोकायुक्त और लोकपाल वाला एक्ट 2013 वाला, वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उस पर आप जो है अमल करके उसको बढ़िया बना सकते हो। ठीक है, मतलब उसको जो है यूज में ला सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट लगातार कहती आई है कि नहीं, इसमें और इंप्रूवमेंट चाहिए और इंप्रूवमेंट करने के बाद ही इसको हम जो है यूजेबल बनाएंगे। Well, my dear friends, see the central government's obvious or pretty but obvious kind of reluctance to set up a statutory, in fact legal anti-corruption unit in our nation, by the way, stands totally exposed after the Supreme Court made it absolutely crystal clear that the existing Lokpal and Lokayukt Act is totally workable, it is implementable without having to be, amended or corrected as proposed by the government. Okay भाई, अब यहाँ और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। See, the government, in fact, the court's order that the law notified in 2014 is good to go is an indictment or the charge of delay in establishing the Lokpal. अब देखा जाए भाई, कोर्ट ने अल्टीमेटली देखो क्या चीज है, कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप जो है, कोर्ट ने बेसिकली ये जो पर्टिकुलर लॉ था ना, ये कोर्ट को नोटिफाई करा गया था 2014 में कि इसमें, क्योंकि तब पूछा था कोर्ट ने कि आपने अब तक क्यों नहीं लगाया है लोकपाल, तो
तो गवर्नमेंट ने जो है अपना रिप्लाई भेजा था, ठीक है भाई। तो खैर, तो अब देखा जाए तो भाई कोर्ट ने ये कहा है, देखा जाए तो अब जबरदस्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये डिले कर रही है लोकपाल एक्ट को लाने में, और ये जो है बिल्कुल हम चाहे मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि इससे आप पे इल्जामात लग सकते हैं कि आप जो है जबरदस्ती डिले कर रहे हो लोकपाल को लाने के लिए, बिकॉज ये बिल्कुल सशक्त है और इसको अप्लाई किया जा सकता है। नाउ द कोर्ट्स ऑर्डर दैट द लॉ बाय द वे व्हिच गॉट नोटिफाइड इज गुड टू गो, इज अ चार्ज बाय द वे, इज अ चार्ज ऑफ द डिले दैट in establishing Lokpal, the government is, indulging some kind of a delay. Okay, well, it is a rejection of the attempt to explain the delay on the ground that that a parliamentary standing committee's report on proposal amendments is totally under consideration. अब देखो क्या है ना भाई, सरकार ये कह रही है कि देखिए भाई सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आप बुरा मत मानिए, लेकिन जो है ये लोकपाल है ना, थोड़ा अभी इसमें भैया का बता नहीं, थोड़ा काम करना पड़ेगा। अभी जो है इसमें हमने एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बनाई है और उसके थोड़े अमेंडमेंट जो है आने हैं, थोड़ा करेक्शन आना है। जब वो सब हमको बता देंगी उसके बाद ही हम इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन कोर्ट कह रहा है सब बकवास है, ठीक है भाई। सो अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट हैज टोटली रिजेक्टेड गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट दैट amendments from a standing committee, by the way, is awaited, and the government and the central and the Supreme Court is like, see, you are talking totally rubbish, and this is not what actually it is what that you are showing, because there is no need of any improvement. The act is good to go. Well, my dear friends, I hope इतना बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो अब लोग आगे देखते हैं। Well, see, the government was on weak legal footing or base when it claimed that it was awaiting the passage of these amendments, mainly of one that related to the leader of the largest party in opposition in Lok Sabha being considered as the leader of opposition for the purpose of forming the selection committee to choose the Lokpal. अब देखो क्या है ना, गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखिए भाई हम अभी इंतजार कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन का या फिर अमेंडमेंट का, और वो अमेंडमेंट ये है कि भाई जो सरकार, इनफैक्ट जो सरकार के ऑपोजिशन पार्टी, देखो क्या है ना, इस लोकपाल को अपॉइंट करने में या लोकायुक्त को अपॉइंट करने में जो कमेटी बनती है ना, उसमें जो है लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है? लीडर देखो टेक्निकली देखा जाए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हम उस बोलते हैं, उस बंदे को बोलते हैं जिसकी पार्टी गवर्नमेंट में नहीं हो, जिसकी पार्टी ऑपोजिशन में हो, और जिसकी पार्टी को कम से कम 10% सीट्स मिले हो लोकसभा में अल्टीमेटली, तो वो एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। द पार्टी विच गेट्स एटलीस्ट 10% सीट्स इन द लोकसभा एंड इज नॉट इन द गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंसिडर्ड द पार्टी इन ऑपोजिशन, और जो उस पार्टी का लीडर होता है उसे हम बोल देते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लेकिन देखा जाए तो हमारे यहाँ ऐसा टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी पार्टी नहीं है ऑपोजिशन में। इनफैक्ट कांग्रेस को, इनफैक्ट सोच लीजिए, कांग्रेस को मतलब लोगों ने ऐसा बंटा धार कर दिया, ऐसी पानी में भैंस भेज दी कांग्रेस की कि बेचारों को 54 सीट रिक्वायर्ड थी ऑपोजिशन वाले बनने के लिए, और वो भी ना कर पाए, सिर्फ 44 पे सिमट गए। खैर एनीवेज, अब देखा जाए तो अब क्या करी सरकार, ये कह रही है कि चलो ठीक है, ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला मैटर है, हम ये उस बंदे को जो है अपॉइंट कर सके कि जो भी बंदा ऑपोजिशन में मेजॉरिटी रखता है, जिसकी पार्टी मेजॉरिटी रखती है, उसको हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान सकते हैं। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट को करवाने के लिए जो है हमें इंतजार करना चाहिए। और सरकार ऑब्वियस है कि कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ऑलरेडी लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंटेड है, तो आप उसको उस कमेटी में घुसाओ और काम चलाओ। Well, my dear friends, now the thing is, see, the government, by the way, is totally it's very weak on its legal base. Why? Because it is claiming that, see, we need a proper leader of opposition, and regarding the same, the standing committees, amendments are awaited. The thing is, the problem arose, in 2014 elections. Why? Because when the elections were held, none of the parties in opposition got at least 10% votes, which was actually required to form a proper opposition. Okay, and even Congress, which actually, Congress, a party which who no one thought will not get even 54 seats, actually got 44 seats. So even they were also not technically eligible to become an opposition. Means the country was
so in fact so tired of them for the last 10 years that they didn't want to see Congress even in the opposition. अब देखो भाई, कोई कांग्रेस सपोर्टर हो दिल पे मत लेना, बस समझ जाओ, ठीक है भाई, बस भावनाओं को समझो, ये पूरे देश की भावना है. खैर, anyways, well my dear friends, anyway, but still, you know, Mr. Kharge, who is actually the leader, he was chosen the leader of opposition because he was the leader, by the way, of the he was the leader of the single party in single largest party in the opposition. ठीक है भाई, तो मतलब ये करके, so by like that he was chosen the leader of the opposition. But anyway, so still there are a lot of technical issues regarding this particular thing, and that is why the government wants the proposal of the standing committee to come out so that there can be some amendment. But the court is saying, since you already have a leader of opposition, there is no need of any kind of amendment. You can just right away start appointing your lokayuks. Well, I hope my dear friends कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है. अगर बैठ भी गया है, समझ भी गए हैं, तो लिख भी सकते हैं समझ गए सर या बैठ गया सर. Now let's take a look at question number 1, and here it is. So the center's obvious reluctance to set up a statutory or legal anti-corruption institution stands completely exposed after the Supreme Court made it clear that. Now my dear friends, what is the correct answer? You got 30 seconds. Your time starts now. Hurry up guys, quickly. Come on. Come on guys, hurry up quickly. And 5, 4, 3, 2, 1. Well, देखो भाई, टाइम तो यहाँ पर खत्म हो चुका है और अलग अलग लोग धीरे धीरे अपना जवाब तेजी से दे रहे हैं. Now, so the question was, the center's obvious reluctance to set up a statutory anti-corruption institution stands completely exposed after the Supreme Court made it clear that. Now option number 1 is the existing Lokpal Lokayuk 2016. Did we talk about the Act of 2016? No, we did not, which means option number 1 is wrong. Okay, option number 2 is the existing Lokpal and Lokayuks Act 2013 is implementable. It can be implemented on its own without having to be amended as proposed by the government. Well, my dear friends, this appears to be true. Now, option number 3 is the existing Lokpal and Lokayuk Act 2013 isn't workable, means it is not workable on its own. Well, my dear friends, option number 3 is also wrong. Option number 4 is the existing Lokpal and Lokayuk Act 2013 is hardly workable. Once again, it means the same as option number 3, hence it's also wrong. Option number 5 says the new Lokpal and Lokayuk Act is workable on its own. The new, now see, we were talking about an act that is already existing and not any kind of a new act, which means option number 5 is also wrong. That means all those of you who have been typing 2, you have done a good job and that is the correct answer. मुझे अभी दिख रहा है किसने लिखा, oh sorry, 2. वेल माय डियर फ्रेंड्स, आप एग्जाम में आंसर एक ही बार चूज करेंगे और यहां भी आपका वही आंसर सही माना जाएगा जो आपने पहले चूज किया है. सो ऑल दोज ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स हु चोज ऑप्शन नंबर 2 राइट अवे and stayed with option number 2 till the last, you have done a good job because that is the correct answer. Now let's move on. Let's take a look at the next part of the article, and here it is. So the selection panel consists of the Prime Minister, the Speaker of the Lok Sabha, Leader of the Opposition, the Chief Justice of India or his nominee, and an eminent jurist or an eminent jurist chosen by them. Okay, अब देखा जाए क्या चीज़ है. तो जो सिलेक्शन पैनल होता है इसके लिए बेसिकली लोकपाल वाला जो सिलेक्शन पैनल है, तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं? उसमें होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, वही साथ ही में उनमें होते हैं जो स्पीकर हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है उसमें, प्लस उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, प्लस साथ ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी होते हैं, या फिर उनके द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड किया हुआ पर्सन वो रहता है, और साथ ही में जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो कोई भी, जो कि बेसिकली ऐसा एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कि बाकी लोग इनको मिलकर चूज करें, तो वो होता है. ठीक है. नाउ द कोर्ट हैज नोटेड दैट द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सिलेक्शन कमिटी टू मेक अपॉइंटमेंट्स इवन व्हेन इट इज ट्रंकेटेड और रिड्यूस्ड ड्यू टू वैकेंसी. अब देखो क्या चीज है. अब देखो भाई, बात यह है, कोर्ट ने यह कहा है
कि एक्ट बेसिकली ये जो लोकपाल ऑलरेडी एक्ट है इसमें जो है समझिए इतनी ताकत हो रखी है, इतनी ताकत दे रखी है कि सिलेक्शन कमेटी जो है किसी को अपॉइंट भी कर सकती है उस वक्त, मान लो मेंबर बनने के लिए, सिलेक्शन कमेटी में आने के लिए, जिस वक्त किसी वजह के कारण जो है कोई ना कोई कमी आ गई हो या इनमें से कोई सीट खाली हो गई हो ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ थिंग. ओके, सो the court, by the way, made it clear that the act, alright, the existing act even provides for the selection committee to make appointments even when it is reduced due to any kind of a vacancy. Now, well, it has made it clear that the fact that some amendments have been proposed and a parliament, by the way, and a parliamentary panel has submitted a report would not constitute a legal bar or a ban on enforcing the existing law. भाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप ये चाहते हो कि कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जाएं और पार्लियामेंट्री पैनल ने यही बोला है आपके कि कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे तभी जो है हम लॉ को रिलीज कर सकते हैं या लॉ को एक्चुअली में ला सकते हैं. अब देखा जाए तो सिर्फ कुछ इंप्रूवमेंट्स करवाने के लिए आप जो है बैन नहीं लगा सकते हैं इस लॉ को लॉ बनने से. All right, so so by the way, the Supreme Court is totally saying that, see, you cannot give me the reason that some amendments are needed and that is why we have put a ban on enforcing this particular law, because that will be totally wrong. All right, I hope कि इतना बढ़िया से दिमाग में बैठ गया है. अगर बैठ गया है तो बसला है ना, तो बसला क्या है ये मसला. Now, see, the court has already, in fact, the court has rightly refused to read down the provision on the leader of opposition to mean the leader of the largest party in the opposition. At the same time, it is curious that an amendment to this effect is pending since 2014, even after it was endorsed by the parliamentary committee in its December 2015 report. अब देखा जाए भाई तो कोर्ट ये कह रहा है कि उस बंदे को जो कि ऑपोजिशन लीडर में बेसिकली देखा जाए तो उस बंदे को मतलब जो कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन हो उसको हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मान ले तो ये गलत हो जाएगा बिना उस 10% के क्राइटेरिया को मीट करते हुए. और साथ ही में कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई ये ऐसी चीज है कि आपने अपने पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली रिकमेंडेशन के बाद भी जो है आपने बाकी सब जगहों पर इसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं किया है. और इनफैक्ट पार्लियामेंट्री पैनल ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया भी था दिसंबर 2015 में, उसके बावजूद जो है आपने इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं करवाया है. So the court has actually totally refused to read down or to understand the provision. In fact, to read down the provision on the leader of the opposition to actually mean the leader of the largest party in the opposition without that 10% criteria. And at the same time, it is also very curious and is asking the government that an amendment in this particular effect is actually pending since 2014, even after it was endorsed and supported by the parliamentary committee in its December 2015 report. ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि ये बढ़िया से एकदम बसला हो गया है. अगर बसला या समझला तो आप लिख भी सकते हो बसला सर या फिर समझला सर. Now let's take a look at question number 2 and here it is for you. So which of the following is true according to the passage? Your time starts now. Hurry up guys, come on, 30 seconds, quickly. Come on guys, quickly, last 5 seconds. Hurry up. Okay, so well, अब देखो भाई, अब यहां बात हो रही थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा बिल्कुल सत्य है पैसेज के हिसाब से. स्टेटमेंट ए में देखो दिया हुआ है द सिलेक्शन पैनल कंसिस्ट ऑफ द पीएम, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, leader of the opposition, the CGI or his nominee, and an eminent jurist chosen by them. Well, option number A, statement A actually is totally correct. बिल्कुल ये सत्य माना जा सकता है. फिर अब देखा जाए तो भाई
अब देखिए, अब देखा जाए तो भाई अब देखो बी में दिया हुआ है द कोर्ट हैज रॉन्गली रिफ्यूज्ड व्हाट, द कोर्ट हैज रॉन्गली रिफ्यूज्ड टू रीड डाउन द प्रोविजन ऑन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू मीन द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। अब देखो भाई क्या चीज है, रॉन्गली रिफ्यूज तो नहीं कह सकते बिकॉज इन द प्रीवियस स्लाइड इट वाज रिटन राइटली रिफ्यूज, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी कैन नॉट बी, इन फैक्ट स्टेटमेंट बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट सी सेज इट हैज मेड इट क्लियर, इन फैक्ट द कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट द फैक्ट दैट सम अमेंडमेंट्स have been proposed, yes, some amendments have been proposed but the government has not acted on them, तो ऐसा कहा गया था कोर्ट के द्वारा, इसीलिए स्टेटमेंट सी भी देखा जाए तो फिर सत्य में माना जा सकता है, means only A and C is correct. So my dear friends, all those of you who chose option number 4, only A and C, you have done a good job because yes, that is the correct answer. So well done my dear friends if you chose option number 4 because that is the correct answer. तो चलिए उम्मीद करता हूं कि 2 of 2 का स्कोर हो गया होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुख मत करो, 1 of 2 जरूर हो गया होगा। साथ ही में you still got 4 more questions coming up. Let's take a look at the next part please. Now, provisions relating to the selection of the Chief Information Commissioner and the Central Bureau of Investigation Director have been amended to treat the leader of the largest opposition party as the leader of the opposition in the absence of anyone recognized as such. ओके अब देखो क्या चीज है, कोर्ट ये कह रहा है कि आपको सारी दिक्कत लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर सिर्फ तभी आती है जब लोकपाल एक्ट या लोकायुक्त वाला एक्ट आता है, और अगर बात जहां होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने की या फिर सीबीआई चीफ को, इनफैक्ट सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, तो वहां पर जो है आप जो ऑपोजिशन पार्टी का जो बेसिकली जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसको आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मान लेते हो, ठीक है, so court by the way is saying, see, you all the problems that you get taking to the government, all the problems that you have is because of the Lokpal and the Lokayukt Act, but when it comes to appointing or the selection of the Chief Information Commissioner or the appointment of the CBI director, then you have very happily accepted the fact that the leader of the opposition of the largest opposition party is actually the leader of the opposition party, or in the absence of anyone recognized as such. Now, the delay in passing this simple amendment is inexplicable, it cannot be explained, and another provision relating to the declaration of the assets by public servants was amended last year. अब देखा जाए वे साथी में तो ये जो लगातार देरी कर रही है सरकार लोकपाल को लाने में, ये ऐसा डिले है जिसका कोई भी वर्णन या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। तो अगर सरकार कहती है बेबी आई कैन एक्सप्लेन, तो हम सब बोल सकते हैं ट्रस्ट मी बेब यू कांट। एनीवेज वेल मतलब बिल्कुल भी इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। वेल अनदर प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन, और साथ ही में भाई एक और प्रस्ताव जो है अल्टीमेटली इनफैक्ट एक और जो प्रोविजन था जो इनफैक्ट कह सकते हैं आप जो प्रावधान था कि बेसिकली जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है वो अपना जो एसेट है जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उसको डिक्लेयर करे, उसमें भी काफी सारे बदलाव और काफी अमेंडमेंट्स किए गए थे लास्ट ईयर. So the actual delay that is being done by the government, in the apps, in fact, that is being done by the government in passing very simple amendments is actually something that cannot be explained at all. And you know what? Another provision, in fact, which was related to the declaration of assets by the public servants, even that got, amended last year. So now the next one is, see, a simple way of resolving the impasse or deadlock was to recognize the Congress party leader in the Lok Sabha as the leader of the opposition. अब देखा जाए भाई तो सिंपल ये सारा जो मैटर था, ये जो पूरा मैटर था ना, इसमें अल्टीमेटली सिंपल सी बात अगर बीजेपी इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये मान लेती कि भाई जो कांग्रेस लीडर है, जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और आप ये लोकपाल बनाते वक्त भी मान लीजिए, तो सारा मैटर खत्म हो चुका होता और हम सबको अपना लोकपाल मिल गया होता. Well, my dear friends, see a very simple way of resolving this particular deadlock was to recognize, in fact, was to identify the Congress party leader, which is Mr. Kharge, by the way, in the Lok Sabha as the leader of the opposition. Okay, I hope कि इतना जो है आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आपको थोड़ा सा अपना इलाज कराना चाहिए. Anyways, I hope that you got it whatever I've said.
So there is no law except a direction from the chair. When the chair doesn't mean the chair with the four legs and two arms. I hope you do handles, not like that. The chair over here means the chairman. अब जैसे ही यहाँ पर चेयर देखा तो आज लोग सोचते सर कुर्सी डायरेक्शन दे रही है। भाई कुर्सी में कोई भूत की आत्मा तो आई नहीं है, तो कहाँ डायरेक्शन देगी? यहाँ पर चेयर का मतलब चेयरमैन होता है, ठीक है। सो देयर इज नो लॉ एक्सेप्ट अ डायरेक्शन फ्रॉम द चेयरमैन. When G.V. Mavalankar was speaker, that says recognition, by the way, is given only to a party that has won 10% of the seats in the lower house. अब देखा जाए तो भाई G.V. Mavalankar जी जब स्पीकर रहे तो उन्होंने ये कहा था कि देखो भाई, हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसी को मान सकते हैं जिसकी पार्टी ऑपोजिशन में हो, जिसकी पार्टी ऑपोजिशन कहाँ हो, ऑपोजिशन में हो, और उसकी पार्टी को कम से कम 10% सीट मिला हो। और ये भाई साहब ने कहा था बहुत जमाने पहले, ठीक है भाई। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो असलियत में 10% वाले को ही मानना है लीडर ऑपोजिशन। इसके लिए रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डायरेक्शन दिया गया था जो कि चेयरमैन एंड स्पीकर मिस्टर G.V. मवलंकर साहब ने कहा था कि रिकॉग्निशन या पहचान ऑपोजिशन वाली उसी बंदे को दी जाएगी जिसकी पार्टी जो है कम से कम 10% सीट जीत जाए ऑपोजिशन में और जो उस पार्टी का लीडर हो। तो सिर्फ मतलब कह सकते हो इसमें सिर्फ क्या डायरेक्शन है, कोई लॉ नहीं है। वेल, nothing is the thing is a 1977 act on this, in fact on the salary of the opposition leader defines the position as the leader of the largest party in the opposition and recognized as such by the speaker. अब देखा जाए तो 1977 में जो है एक एक्ट बनाया गया था जिसमें कि ऑपोजिशन लीडर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए ये डिफाइन किया जा रहा था। और साथ ही में उसमें यह बोला गया था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बंदा होगा जो कि कौन होता है, जो कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन होता है, यानी कि उसमें कोई 10% का क्लॉज नहीं था। और साथ ही में और उसको वैसी पहचान दी जाती है स्पीकर के द्वारा। So a 1977 act, by the way, which actually decided the salary of the leader of the opposition. Over there, in that particular act, it is clearly written that the leader of the opposition is supposed to be. It actually defines the position of a person who is the leader of the largest party in the opposition without the 10% clause, and it actually recognized or identified as such by the speaker. ठीक है भाई, okay. Now an inescapable or unavoidable inference is that the country does not have an anti-corruption ombudsman, which means an investigating officer, not due to any legal bar but due to the absence of political will. तो देखा जाए तो नियम कानून सारे बढ़िया है, नियम कानून में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के जो नियम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन देश के नियम को मजबूतता से मजबूती के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए जो पॉलिटिकल विल है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और वरना लोकपाल बिल्कुल मिल गया होता, ये जबरदस्ती का फंसा के रखा गया है हमारी सरकार के द्वारा, जो कि नहीं करना चाहिए था सरकार को। नाउ बाय द वे so totally, in fact, something that's that's coming out, by the way. See, what we can take away from this particular article is that there is no such law which is actually binding or which is actually blocking the Lokpal or the Lokayukt Act to be implemented, but it's just the political will that is not there from our government, on the part of our government to implement the Lokpal on the Lokayukt Act. Now, let's take a look at question number 3, which is going to be a Royal Rumble Para Jumble, and here it comes for you. So my dear friends, you got 120 seconds because it is a 7-sentencer and you have to arrange it in 120 seconds. Your time starts now. Hurry up guys, come on. Come on guys, come on, 9 seconds more, hurry up.
Come on guys, hurry up, just 1 minute left, hurry up, come on. So FAGBECD says Jyotsna, that's very good. Okay, so FAGBECD says Anushka, FAGBECD says Abhinandan Kumar, और बाकी लोग सब लगता है यही है कि कॉपी पे कॉपी मार रहे हैं। अगर कॉपी मार रहे हैं तो भाई एग्जाम में आप कॉफी नहीं पी पाएंगे, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। वेल माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स माय टर्न टू गिव यू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरा जंबल एंड द ऑर्डर इज, कबीर जी आपने सॉल्व कर लिया? कैन वी हैव द आंसर? Yes, so it is FAGBECD. That means the correct order is FAGBECD. जरा एक बार फिर से देख के जरा नाइना सेक लो, ये है FAGBECD. Yes, my dear friends. So this is the correct order, and if you guys have the similar order, honestly, then you can give yourselves 1 marks. ठीक है भाई? और वो सभी लोग जो बिल्कुल चोरी छिपे जो है कमेंट्स में झांक करके जिन्होंने अपना आंसर दिया है, उनको जो है अंडा मिलता है, वो भी मुर्गी का, और वो भी मंगलवार के दिन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? नाउ बाय द वे, सी इफ यू आर एबल टू गेट इवन 4 ऑफ दीज सेंटेंसेस करेक्ट, यू कैन गिव योरसेल्व्स हाफ मार्क्स। ठीक है भाई, देखो स्टेटमेंट एफ क्या है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, okay, and the central and the CBI director have been amended to what? To treat the leader of the largest party or largest opposition party as the leader of the opposition in the absence of anyone, in the absence of okay, anyone recognized as such. Now the delay in passing this okay, this simple amendment is inexplicable. Another provision relating to the declaration of assets by public servants was amended last year. A simple way of resolving the impasse. You know, sir, I have not copied. That's very good, because you know what? I hate cheap knockoffs. Well, my dear friends, see, I hope कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया हो गया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा this particular article. Now, let's take a look at the next part of the next article. In fact, let's take a look at the next article. और हाँ, इसकी summary मुझको जरूर भेज देना if you want yourself to be rewarded in the Hindu editorial analysis of tomorrow. Now, let's have a look at the next slide, please. So the next article over here is equity in taxes. तो भाई अब देखा जाए तो यहाँ पर भाई देखा जाए तो equity in taxes, इसके रिगार्डिंग यहाँ बात हो रही है। अब क्या है equity in taxes? अब देखो equity primarily over here means equality. So equality in taxes, and why exactly is this particular thing? Let's take a look at the next one. So, अब देखा जाए भाई, see, a controversial proposal by Vivek Debroy, a member of government think tank Niti Aayog, to tax agricultural income above a particular threshold level has led to a public exchange of views. अब देखो क्या है, अब देखो नीति आयोग में ना एक बहुत मतलब होनहार किस्म के व्यक्ति रहे, मतलब वैसे तो सारे लोग ही बहुत होनहार है नीति आयोग के, लेकिन उनमें जो है एक बहुत ज़्यादा होनहार व्यक्ति रहे, उनका नाम रहा विवेक देबरॉय। ठीक है भाई, अब विवेक देबरॉय बाबू ने क्या कहा कि देखो भाई, सरकार को ना उन लोगों को टैक्स करना चाहिए, मतलब टैक्स लेना चाहिए, इनकम टैक्स लेना चाहिए, जो लोग जो है मतलब किसान तो है लेकिन काफ़ी अमीर है। ठीक है, मतलब अमीर किसान है। ठीक है, अब देखा जाए तो ऐसा जैसे ही सुना सब भैया लोगों ने हमारे कंट्री के, तो मतलब दे आर लाइक, अरे ऐसा कैसा हो सकता है भाई, ऐसा कैसे, किसान गरीब है भाई, किसान गरीब को भी आप जो है टैक्स देंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये गलत बात है भाई, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। जो क्या है ना प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि कोई चीज़ समझते लोग बिल्कुल क्या है ना, लोग समझते क्वार्टर है, ओ सॉरी सुनता आधा है, समझते क्वार्टर है, समझते उससे भी आधा है, और बोलते एकदम डबल है। ठीक है भाई, तो इसीलिए खैर देखा जाए तो विरोध पहले होता है हमारे देश में हर चीज का। सो यू नो, अ कंट्रोवर्शियल प्रपोजल बाय द वे, नाउ इट हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड कंट्रोवर्शियल बाय दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, बट एनीवे, नाउ अ प्रपोजल व्हिच लेड टू कंट्रोवर्सी बाय मिस्टर विवेक देबरॉय. ही इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग. ही सेड दैट सी, those people who are pretty who are rich and who are there in who are earning agricultural income, they should be taxed, and if they are over a particular level. Okay, now this particular thing, this particular thing has led to a public exchange of views. Well,
Now the thing is, see, Finance Minister Arun Jaitley quickly dismissed any plans to tax farm income, but more policymakers have begun to voice their opinion. The latest being the Chief Economic Advisor Arvind Subramaniam, who made it clear that taxing farm income is actually a state subject. अब देखा जाए भाई, सी जो वित्त मंत्री साहब थे भाइयों बहनों, जो हमारे वित्त मंत्री साहब थे माननीय अरुण जेटली जी, उन्होंने ये कहा है कि हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, हमारे किसान के ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं लगाने वाले हैं, चाहे जैसा उनका एग्रीकल्चर इनकम हो। ठीक है भाई। अब लेकिन देखा जाए तो एक दिक्कत हो गई सरकार को। दिक्कत ये हो गई, जो उनका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम, he also said the same thing, that see, you know, it is correct what Mr. Debroy has said, and you know, see, the thing is, we can tax the people who are rich, and in fact, see, the thing is, taxing income, you know, taxing agricultural income is actually a state subject. It is to be decided by the states. Okay. So by the way, you know, Finance Minister Arun Jaitley immediately came into the front and said, dismissed any kind of these things. You know, there are no plans to tax any kind of agricultural income, and we are not going to do this. ठीक है भाई। तो देखा जाए तो मतलब जो अरुण जेटली जी थे, so Mr. Arun Jaitley immediately came forward and he denied any such kind of things like what Mr. Vivek Debroy was saying. But the chief economic advisor of our nation, Mr. Arvind Subramaniam, also supported Mr. Debroy in his own way, and he also said that taxing farm income is actually a state subject. I hope, my dear friends, कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए भाई अब आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। Now the public image of farming being a poor man's venture or journey, and the sizable, you know, and the sizable vote share that farmers enjoy have made the idea of farm taxes a political taboo or a ban. अब देखा जाए भाई, देखो क्या चीज़ है ना, दो बहुत अहम पॉइंट है जिसकी वजह से हम हरगिज़ भी मतलब किसी भी किसान को टैक्स नहीं चाहेंगे कि कोई किसान टैक्स दे। पहली बात ये भाई कि आमतौर पर हम लोगों के दिमाग में एक मतलब ऐसा इमेज बना हुआ है, जब भी हम किसी किसान के बारे में सोचते हैं तो जनरली दिमाग में क्या आता है, जो मेरे दिमाग में आता है मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपके दिमाग में कुछ ऐसे ही आता हो। मतलब दिमाग में बेचारा गमछा लिया हुआ है, हाथ में जो है मतलब पड़वा या कोई जो है मान लो कोई ऐसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा हुआ है खोदने के लिए ज़मीन, साथ ही में मतलब एकदम गंजी में घूम रहा है, और जो है उसने एक धोती टाइप का या फिर कुछ लुंगी टाइप का पहन रखा है। उसकी बेचारे जो है अल्टीमेटली काफ़ी उसकी जो बनियाइन है, जो गंजी की जो है वो भी बहुत फटी सी है। तो मतलब एक पुअर मैन का जो बेसिकली सिनारियो है, कुछ ऐसा दिमाग में आता है आपके जब भी आप सोचते हो किसी पर्टिकुलर फार्मर के बारे में। तो ठीक है, तो ऑब्वियस अब आप क्या चाहते हो कि इस इंसान को हम टैक्स लें इससे। तो मतलब एक तो ये पुअर मैन इमेज है कॉमनली फार्मर्स की, तो उससे हम लोग टैक्स करें तो मतलब ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। साथ ही में भाई फार्मर्स बहुत बड़ी वोट शेयर रखते हैं बेसिकली देखा जाए तो जब इलेक्शंस की बात आती है। तो अब इसीलिए क्योंकि उनका वोट शेयर बहुत ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये बिल्कुल ही मतलब बैन, इनफैक्ट बिल्कुल बैन या कह सकते हो, एकदम कह सकते हो ये ऐसी बात है जो कह सकते हो आप बोलना ही नहीं है आपको। ठीक है, मतलब बिल्कुल ये इट इज समथिंग एकदम अपशकुन किस्म का है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ऐसा कुछ भी बोलना कि फार्मर्स को जो है हम लोग कह सकते हो उसको टैक्स करेंगे, नहीं, ये अपशकुन है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। सी द पब्लिक इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर फार्मर इज दैट यू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ रियली पुअर गाय, you know, who doesn't even have proper coats, by the way, who doesn't even have proper clothes, and you know what, he is very he doesn't wear proper clothes, he is not able to eat himself very properly, he is not able to feed his family, by the way, properly, and still the government wants to tax it, so that makes the government very evil, by the way. And on the other hand, you know, what do you say, the farmers have got the lion's share of vote, by the way, in our elections. So by the way, they contribute a lion's share of vote in the elections, and that is why it's actually a taboo. It's totally taboo for political parties to speak on the subject and to think even that the farmers must be taxed. Now, the frequent distress faced by the poor or marginal farmers, which could be attributed to structural issues other than taxation, hasn't helped matter either. अब देखा जाए, देखो भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमारे फार्मर्स जो हैं 1947 से लेकर अब तक खुदकुशी करते आए हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा
भाई कह सकते हैं आप परेशानियां और कठिनाइयां अब भी झेलनी पड़ती है। और ये सच में देखा जाए तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि ऑन एट वन हैंड वी हैव रीच्ड मास एंड ऑन द अदर हैंड वी आर स्टिल नॉट एबल टू फीड द पर्सन हु इज फीडिंग द नेशन। ठीक है भाई, तो देखा जाए तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। तो ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, बहुत ज्यादा परेशानी है हमारे देश के जो गरीब किसान हैं, जो हमारे देश के बेसिकली जो मार्जिनल बेसिकली फार्मिंग करते हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है ये इसलिए फेस नहीं करनी पड़ती है उनको कि बिकॉज उन्होंने बेसिकली कि उनको टैक्स किया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की दिक्कतें हैं ये उस वजह से उनको फेस करना पड़ता है। सो द फ्रीक्वेंट और द कॉमन डिस्ट्रेस विच इज एक्चुअली फेस्ड by our poor or marginal farmers, it cannot be attributed to the fact that they are being taxed, but there are some other things which have been there from a long time, But India has a presence of rich farmers as well, and there exists a strong justification for taxing them in order to widen the country's embarrassingly narrow tax base. लेकिन एक बात जो ये है मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर फार्मर है तो वो गरीब ही होगा। मैं एक से एक अमीर फार्मर्स को भी जानता हूं। कहने के लिए तो भाई साहब वो बिजनेस इनफैक्ट फार्मर है, लेकिन एक्चुअली में वो बिजनेसमैन है। उन्होंने बेसिकली बहुत सारी उनकी खेतीबाड़ी की जमीन है, तो बेसिकली वो दिखाते खुद को एज अ फार्मर है, लेकिन एक्चुअली उनके फील्ड में बाकी गरीब फार्मर्स जो है काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे किस्म के बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा रिच फार्मर्स हैं, और वो जो कि उस गरीब किसान का पैसा मार रहे हैं और अल्टीमेटली उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो ये उनकी बात हो रही है कि ऐसे जो विजय माल्या टाइप के फार्मर्स हैं इनको टैक्स दिया जाए, इनको जो है टैक्स किया जाए और इनसे निचोड़ के टैक्स लिया जाए, But India, in fact, but our nation, by the way, it has got a rich presence of, it has got a real presence of rich farmers as well, and there exists a very strong justification for taxing them in order to widen, in fact, to broaden the country's embarrassingly low tax base. अब देखा जाए तो हमारे देश का जो टैक्स बेस है वो बहुत ज्यादा पुन्ना सा है, तो उसको अगर बढ़ाना है तो हमें अलग अलग स्टेप्स लेने होंगे. Now, my dear friends, let's take a look at the question number 4, and here it is for you. So, which of the following is not true according to the passage? Now, my dear friends, tell me quickly what's the correct answer. You got 30 seconds. Time starts now. Hurry up. Come on. Come on, guys. 15 seconds more. The answer. So 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. तो भाई देखो यहाँ पर समय जो है वो समाप्त हो गया है. Now it's my turn to give you the answer. So which of the following is not true or is false according to the passage? Now see, statement A says a lovely proposal by Bibek Debroy, a member of the government think tank Niti Aayog, to tax agricultural income above a particular threshold has led to a public exchange of views. Well, my dear friends, it was not a lovely proposal, or because it was not written like that in the previous slide, hence this can be considered as not true or false. B में दिया हुआ है, the economic advisor, chief economic advisor Arvind Subramaniam made it clear that taxing farm income is a center subject. No, he did not made it clear like that. Means option number B is also not true. Statement C is the public image of farming is that it's a poor man's venture. Well, my dear friend, option C is true, which means option number 4, only A and B, that is the correct answer, and I hope that all of you would have given the same answer. Now, let's take a look at the next part of the article, and here it is. So see, Mr. Debroy suggested that an appropriate tax policy should draw a distinction between rich and poor farmers, thereby addressing the widespread political apprehension of bringing agriculture under the tax net. अब देखो मिस्टर देब्रॉय जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो आपको एक ढंग की टैक्स पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें जो है आप डिवाइड कर सको कि कौन से फार्मर्स अमीर हैं, कौन से फार्मर्स गरीब है, और जो फार्मर्स अमीर हो उनको आप जो है एकदम बढ़िया से निचोड़ के टैक्स ले सको, उन पे भी जो है मतलब बढ़िया से टैक्सेशन लगा सको. नाउ
अब see, Mr. Devroy, by the way, who is the very honorable member of Niti Aayog, he said that, an appropriate tax policy must be there, which actually divides the farmers into rich and poor, by the way, and those people who fall in the category of rich, they are properly taxed very nicely, and it is no secret that India's tax base standing at a minuscule or a small 5.9% of the working population is already among the lowest in the world. Well, my dear friends, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है ये बताते हुए कि मैं इस 5.9% में आता हूँ, ठीक है भाई। तो देखा जाए तो हालांकि ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जो इनकम टैक्स का बेस है हमारे देश में वो किस पर है, वो 5.9% है, यानी कि हमारा वर्केबल पॉपुलेशन जो है, जो हमारे सैलरीड लोग हैं, इनफैक्ट जो भी लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं, who have got jobs by the way, of them only 5.9% people pay their tax, and which is actually the smallest। ये सबसे जो है एकदम सबसे पुन्ना सा है, सबसे इत्तू सा है पूरे दुनिया में, और ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरी और शर्मनाक बात है ना। And by the way, I am very proud that I am actually a part of this 5.9%, and I hope that a lot of you are also a part of this 5.9%. Now, my dear friends, see, it is not a secret that India's tax base, which actually stands at a minuscule or small amount of 5.9% of the working population, is actually already among the lowest in the world. ठीक है भाई, चलो खैर। Now, this unnecessarily burdens the more of the formal sectors of the economy that are already overtaxed at the same time. It handicaps or restricts the government spending on social sector as well. अब देखो क्या है कि जब obvious है कि आपका जो एक पर्टिकुलर देखो क्या चीज़ है ना, जो इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन है, जब वो इतना कम टैक्स पे करेगा 5.9% पे, तो उससे होगा क्या, तो उससे सरकार जो है, जो बाकी के सेक्टर्स हैं, उनसे एकदम निचोड़ के बोरा भर के टैक्स लेके आएगी, और उन पे जो है ज़्यादा दबाव पड़ेगा बाकी के फॉर्मल सेक्टर्स पे। और साथ ही में भाई, तो इससे देखो सरकार जो है ना, सरकार की जो स्पेंडिंग है सोशल सेक्टर में, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। Now, see, this fact that, only 5.9% of the working population of our country pays tax regularly, this unnecessarily burdens the more formal sectors of our economy, that are already overtaxed, and they get even more milked for taxations. And, at the same time, it also restricts our government spending on the social sector. I hope, my dear friends, कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छा, अब आगे देखते हैं। वेल, the case for treating agriculture at par with other sectors is thus clear. अब देखा जाए मतलब बेसिकली अगर हम लोग एग्रीकल्चर को बिल्कुल बाकी सेक्टर्स के साथ बराबरी पे लाएंगे तो ये बिल्कुल साफ चीज है और बिल्कुल स्पष्ट वाली बात कह सकते हैं हम। सो द केस ओवर हियर, the case, by the way, that we should treat agriculture at par or at equal, with other sectors is totally clear. But policy makers must also show equal care and urgency in addressing the structural issues facing the sector. अब देखा जाए भाई, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनको बहुत जल्दी हो रही है कि अमीर जो फार्मर्स हैं उनको एकदम भर के उनसे टैक्स लिया जाए, लेकिन जो गरीब फार्मर्स हैं उनके लिए भी इतनी चिंता होनी चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, ताकि वो लोग भी जल्द से जल्द उस टैक्स कैटेगरी में आ सकें। ठीक है। वेल, सो माय डियर, इनफैक्ट देखिए मेन चीज ये है कि मतलब वो लोग भी जो है एक अच्छी जिंदगी जी सके और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। सी सो बाय द वे द पॉलिसी मेकर्स मस्ट ऑल्सो बी दे मस्ट ऑल्सो शो extreme care and extreme care, by the way, and urgency for the farmers who are not so rich, who are actually poor farmers and who are the real farmers of our nation, and they should also be taken care of by the policy makers who are so in such a hurry to tax the rich farmers. Now, अब देखो भाई क्या चीज है, दिस इंक्लूड्स अमंग मेनी रिफॉर्म्स टू बी ब्रोकन एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन दैट स्टिल लीव्स फार्मर्स एट द मर्सी ऑफ मिडलमैन कार्टन। देखा जाए तो बिचौने जो हैं, अब भी बहुत सारे जगहों पे बिचौने काम करते हैं, और ये बिचौने वही होते हैं जो फार्मर्स से जो है उनकी उपज लेते हैं, अल्टीमेटली जो भी अल्टीमेटली वो जो है मतलब वो साफ जो प्रोड्यूस कर पाते हैं, और फार्मर्स का प्रोड्यूस जो है मार्केट में जाके बेच के आते हैं, और उसमें होता क्या है, वो फार्मर्स से भी एक कुछ पैसे ले
लेते हैं, साथ ही में जिनको बेचते हैं उनसे भी कुछ पैसे ले लेते हैं, और ये सारा जो पैसे आता है ये उसी पैसे से निकलता है जो कि फार्मर की इनकम होती है। यानी कि फार्मर की इनकम जो है 2 बार ये बिचौने जो है वो मार लेते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को कम पैसा मिल पाता है, उतना पैसा नहीं मिलता है जितना कि वो डिजर्व करते हैं, यू नो। सो बाय द वे, सो a lot of places are still there where middlemen actually they are the people who cut the income of the farmers, you know, and such middlemen need to be targeted and shot right here. Anyway, even not shot right there, that's not the solution for everything, but still, you know, they need to be removed right away. So such reforms are crucial farming, and see, such reforms are crucial to if farming is to become a sustainable enterprise in the long run. Else a tax on the high income farmers will result only in driving resources away from agriculture into other sectors. अब देखो क्या चीज है ना, हर अमीर फार्मर भी खराब नहीं है, और अगर आप ज़बरदस्ती हर अमीर फार्मर पे टैक्स लगाओगे बिना उसको साथ इनफैक्ट बिना फार्मिंग सेक्टर को या बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बाकी सब सुविधाएं देके, तो ऑब्वियस है कि उसमें रिच फार्मर्स भी बहुत जल्दी गरीब फार्मर्स बन जाएंगे और उनको जो है ज़बरदस्ती बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। सो यू नो व्हाट, a lot of transformations are needed, you know, and first of all, before taxing the rich farmers, it's very important that, you know, that this sector, you know, it gets improved and all the requisites are provided to agriculture sector or the poor farmers, and only then the farmers, the rich farmers need to be taxed, else it is going to lead to chaos. And now, my dear friends, it is time for you guys to solve a question on the new pattern close test. I hope you guys are ready, and here it is. So, okay, sorry, it's not about the new pattern closes, it's about the suitable theme. I'm sorry about that. Well, so the question is, what is the suitable theme for this particular passage in your mind? Well, option number 1 is, and 2 is, and 3 is, and 4 and 5 is right here for you. Answer quickly. You got 30 seconds. Time starts now. Hurry up, guys. Come on. Come on, guys, quickly. What's the answer? 10 seconds more. Hurry up. Okay, so a lot of answers are being given over here. Well, what is the suitable theme for the passage? Now, statement A is farmers are rich. Statement 2 is, okay, option number 2 is we only have poor farmers. Option number 3 is farmers must be taxed. Option number 4 is low tax base of India. Option number 5 is rich farmers must be taxed. Now, my dear friends, देखो क्या है ना, अब देखो, I was telling you about something about understanding. The reason why you guys are not able, primarily most of you guys are not able to get the suitable theme right is because commonly people have a habit of listening half, understanding quarter and speaking double. ठीक है भाई, तो क्या चीज है, अगर आप सभी लोग बिल्कुल वही समझते जो मैं आपको समझा रहा था और अगर सच में आप बैठा पाते दिमाग में जो आपको बिठाया जा रहा था, तो आप ऑप्शन नंबर 5 के अलावा कोई और जवाब नहीं देते. So well, my dear friends, please try to improve your comprehensive capabilities. Option number 5 is the correct answer. So rich farmers must be taxed. That is the correct answer. Now let's move on. Let's take a look at the next part of the article, and it is, so it would make no difference in fact to poor farmers stuck in agriculture merely because of the lack of opportunities. अब देखो क्या है ना, जो rich farmers होंगे, अब देखो obvious है कि अगर जो rich farmer है और जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन भी है और उसके फार्म पे जो है जो गरीब फार्मर्स हैं वो काम कर रहे हैं, अब मान लो रिच फार्मर्स पे ज़्यादा टैक्स लग गया, तो ज़्यादा टैक्स लग जाएगा तो फिर वो जो गरीब फार्मर्स को जो इनकम दे रहा है वो इनकम नहीं दे पाएगा, है ना. तो उससे होगा क्या, उससे जो गरीब फार्मर्स हैं उनमें से कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो इसीलिए भाई, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर रिफॉर्म करना है तो सब कुछ हर तरीके से प्रॉपर्ली बैलेंस में करके रिफॉर्म करना होगा ताकि सब लोग एक अच्छी पोजीशन में रहे, एक बैलेंस पोजीशन में रहे. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. सो इट वुड एक्चुअली मेक नो डिफरेंस एट ऑल टू पुअर फार्मर्स, यू नो, who actually in fact they are stuck in the agriculture, and in fact many a time they work for the rich farmers, and even if the rich farmers get taxed heavily, then only these
poor farmers who work for these rich farmers, they will even lose their job again. Okay, so now in this context, the historical transition or transformation of labor and other resources from agriculture into other sectors is particularly useful to keep in mind. अब देखो क्या चीज़ है साथ ही में, अब अगर जो फार्मर्स होते हैं, अगर देखो क्या है ना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी फार्मिंग सेक्टर में, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो इवेंचुअली वो लोग जो है बाकी के सेक्टर्स में चले जाएंगे लेबर बन करके। और देखा जाए तो ये जो ट्रेंड है, जो मार्केट की जो ट्रेंड है, जो बाकी सब जो बेसिकली स्टडीज में जो ट्रेंड हम देखते हैं, उससे फिर हमको और अच्छी जानकारी मिल सकती है इस चीज़ के बारे में। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट दैट दैट फार्मर्स आर गोइंग टू लूज they are going to lose opportunities in their sectors, in the agriculture sector, if the rich farmers get taxed heavily. So this will actually put some light, or it actually highlights the historical transformation that has been there of labor, where farmers have left their jobs and in fact have ventured into other sectors. Now see, the thing is, the said transition have been very slow in India though. In fact, according to the census figures, the size of the farm workforce increased by 28.9 million between 2000 and 2011. अब देखा जाए तो देखो, हो सकता है कि ऑब्वियस है कि फार्मर्स जो है, मतलब जिनको अच्छे से नौकरी वोकरी नहीं मिल पा रही, इनफैक्ट फार्मर्स जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं बची थी एग्रीकल्चर में, तो वो लोग दूसरे सेक्टर में चले गए होंगे। लेकिन ये जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इंडिया में उतना नहीं दिख रहा है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा धीरे भी है। साथ ही में अगर हम सेंसस के आंकड़ों को देखें तो 2001 में और 2011 में बहुत तगड़ा डिफरेंस आया है, और फार्मर्स की बढ़ोतरी हो गई है 28.9%। ठीक है भाई। So ultimately, this particular transformation of labor from agriculture sector to other sectors, this has been negative actually in India. Why? Because according to the census figures of 2001 and 2011, there has been an increase of 28.9 million farmers in our nation, which is actually on one hand very good for the population, but then again now we need to know why exactly this particular thing happened. See, this is due to a combination of factors, but one in particular is worth noting: the difficulty agricultural workers face in finding jobs in other more advanced sectors. तो मतलब देखो जाए, हो सकता है कि आपको अलग अलग वजह लगे, लेकिन जो एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंक्रीज हो गई है ना फार्मिंग सेक्टर में, वो इसलिए है कि बेसिकली जो किसानों की जो कॉमनली फैमिली होती है, अब see, many a time we see some of them becoming IAS officers, we see some of them becoming some other government officers, and that's a beautiful thing. But the majority of the people from the family of the farmer, they find it very difficult in joining some other sector and progressing in life. Okay, तो कई बार ऐसा होता है कि हम फार्मर्स के देखते हैं कि फार्मर का बेटा या फार्मर की बेटी जो है IAS ऑफिसर बनते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं, उनके जो घर के लोग हैं, वो किसी और सेक्टर में नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस डिफिकल्टीज, और जिसकी वजह से जो है उनको एग्रीकल्चर ही अपनाना पड़ता है घूम फिर के। नाउ अ टैक्स ऑन ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव हाई वैल्यू फार्म वेंचर्स which affects their ability to absorb laborers from low value farming could make life more difficult for farmers unable to make farming, for farmers unable to make the cut in industry or services. अब देखो क्या चीज है, अब ऑब्वियस है कि अगर मान लो अट्रैक्टिव किस्म का, क्योंकि रिच फार्मर्स बहुत अट्रैक्टिव सोर्स लग रहा है टैक्स करने के लिए, तो इस बात के लिए अगर हम रिच फार्मर्स को टैक्स करना शुरू कर देंगे तो वही होगा, तो उनके अंडर जो गरीब फार्मर्स काम कर रहे हैं, फिर असलियत में मार उनको झेलनी होगी और फिर से बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो वंस अगेन द सेम काइंड ऑफ अ थिंग which actually I told you that the same thing, that see, if the rich guys, the rich farmers will get extremely taxed, then again it can also be negative, because then after that, if that happens, then they'll be really able to give employment and jobs to only a small amount of poor farmers, which will then again affect the poor farmers in a really bad way. Now I hope कि बढ़िया से बैठ गया दिमाग में, अगर बैठ गया है तो अच्छी बात है। Well, given this, policymakers ought to treat or walk carefully as they move forward on a long overdue fiscal reform. तो obviously देखो भाई, हमारे देश का जो इनकम टैक्स का बेस है, इसको बहुत अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हाँ,
जो बेसिकली पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के इस पर्टिकुलर चीज को पे आगे बढ़ना चाहिए. सो डेफिनेटली द टैक्स बेस ऑफ आवर नेशन मस्ट गेट इंक्रीज्ड, बट द पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी रियली केयरफुल टू नो इन फैक्ट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट दे आर थिंकिंग. सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स जो समझाया बढ़िया से वो बोसे गचे है आपके दिमाग में. अगर बोसे गचे है तो आप लिख भी सकते हो बोसे गचे सर मतलब बैठ गया सर. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट एंड हियर इट इज. सो well, it would make no difference to poorer farmers stuck in agriculture merely because of the lack of opportunities. In this context, the historical, now my dear friends, is the word transitioning okay in this particular in this particular place, or do we need some other option? And here are your options as well. Your time starts now. 30 seconds. Quickly guys, answer, come on. What should be used here? Come on guys, quickly. Okay guys, I'm going to give you some more time. Come on guys, answer quickly. What is the correct answer? Hurry up. Okay. So it would make, okay, तो यहाँ बात हो रही थी कि कौन सा वर्ड यहाँ आ सकता है. So see, in this context, the historical blank space of labor and other resources from agriculture into other sectors is particularly useful to keep in mind. ठीक है भाई. तो देखो बात ये है कि transitioning यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है, but we want something that shows change. Okay. Progressed, the historical progressed of labor. Well, देखो ये once again doesn't make any sense because it has to be in it has to be a noun over here. Now see, option number 2 says transformation. Transformation makes pretty good sense, and ये ing form में भी नहीं है, ये proper noun form में है, तो ये लगा सकते हैं हम लोग. Now see, in this historical passing of labor and other resources. अब देखो passing over अगर दिया होता तो काफी अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर ये सेंस नहीं बनता है. एंड बिकॉज सी एक तो ये ing फॉर्म में तो बिल्कुल ठीक से नहीं बैठ पा रहा है. ऑप्शन नंबर 4 में देखो क्या है, स्टैग्नेशन. So once again we have a noun here, but then again it is pretty much opposite to change or transformation. So that's why this cannot be the answer over here. This is totally anonymous. Now option number 5 is no change. Well, my dear friends, we need a proper noun over here which is not an ing form. That means option number 2, transformation, is the correct answer. And all those of you who chose option number 2, you have done a good job because that is the correct answer. I hope, my dear friends, that you enjoyed this session and you scored 6 of 6 for sure. And if it's not 6 on 6, even 4 on 6 and above is also a very pretty cool score. Now let's take a look at the next part of the article, which is going to, in fact not the article, the next part of the slides, which will show you the other important articles today. And the next slide. Well, the other articles for review today are being pragmatic with Pyongyang, which means dealing with North Korea, now guided by the constitution. Then national, the national in the municipal, see, the thing is, this is regarding the elections once again. Sukma is a wake-up call. Well, what happened with the CRPF men over there? Now, giants under scrutiny. Well, this is regarding the Nehru-Gandhi legacy, and I hope you can find about that. Well, my dear friends, see, if I had to tell you which of one of these is pretty important or is pretty important, I'd say guided by the constitution and being pragmatic with Pyongyang. Okay, so you can read these two if you think they are, if you find them interesting. Now, so that was all in this particular session of the Hindu editorial, my dear friends. I hope
that you remember to write a summary to me and write it properly in 250 to 300 words and mail it to me at saurabh.day@adda247.com. And if your summary will be really cool, it will be really nice, then definitely I will choose you as a person who will get honored in tomorrow's The Hindu editorial. Till then, this is Saurabh Day. Peace out.